हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जस्ट इंग्लिश क्लासेस। तो शुरू करते हैं गाइज आज की क्लास को बिना देखिए। तो आज की हमारा जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे, चाहे आपका एलटी हो, टीजीटी, पीजीटी हो या फिर जीआईसी हो। तो किसी भी एग्जाम के लिए ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल रहेगा। चलिए शुरू करते हैं बिना देर के। लाइक शेयर कर दीजिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और सभी लोगों के पास पहुँचा दीजिएगा गाइज। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, इन विच प्ले गर्ल्स वर रेनाउंसेस रेशियल प्रेजुडाइज फॉर जस्ट सोशल ट्रीटमेंट टू ऑल क्लासेस ऑफ पीपल इन सोसाइटी। देखिए, रेशियल प्रेजुडाइज की अगर बात होती है या फिर ट्रीटमेंट ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ पीपल इन सोसाइटी की बात है, तो यहाँ पर लॉयल्टीज हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉयल्टीज इनका आया था 1922 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इन विच प्ले गर्ल्स वर डिजायर्स टू अवॉइड द इविल्स। जो इविल्स होती है अनएम्प्लॉयमेंट की, एंड प्लेयर्स फॉर सिंपैथी फॉर वेप्स। वेप्स कौन होते हैं? जिन बच्चों को फेंक जाते हैं मतलब प्लेटफॉर्म वगैरह पे, गंदे से कपड़ों में वो लोग मांगते रहते हैं, तो उसको बोलते हैं। तो द सो में, द फॉरेस्ट में, सिल्वर बॉक्स में। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सिल्वर बॉक्स की बात यहाँ पे हो रही है। सी ऑप्शन इज वेरी करेक्ट। चलिए थर्ड क्वेश्चन कहता है, इन विच ऑफ हिज बुक गर्ल्सवर्दी मेक्स दिस ऑब्जर्वेशन, अ गुड प्लॉट इज दैट शोर एडिफाइज which rise out the interplay of circumstances on temperament and of temperament on circumstances within the enclosing atmosphere of idea। बताइए इसमें ये जो है कहाँ पर आपको मिलता है? तो देखिए इसमें आप यहाँ पे लगा लीजिए एटमॉस्फेयर ऑफ आइडिया। आप इस क्वेश्चन को इससे याद रखेंगे कि जो इनके आइडिया थे नॉवेल्स या फिर ड्रामा वगैरह को लेके, वो कहाँ पर थे? द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी, यानी कि ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। लाइन कंसिस्टिंग ऑफ वन मीट्रिकल फुट, जिसमें केवल वन मीट्रिकल फुट होता है, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसका जो करेक्ट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे मोनोमीटर हो जाएगा। मोनोमीटर कहते हैं। इटालियन स्टेंजा फ्रॉम कंपोज्ड ऑफ 11 सिलेबल राइमिंग, ए ए ए बी ए बी ए बी सी सी। बताइए 11 सिलेबल होते हैं, राइमिंग स्कीम होती है ए बी ए बी ए बी सी सी। तो इसको क्या कहा जाएगा? तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? इसको ऑटावा रिमा कहते हैं। ऑटावा रिमा हमारा करेक्ट आंसर है। In art and literature, the act of describing animals and things as having human feelings. In art and literature, the act of describing animals and things as having ह्यूमन फीलिंग्स। तो ह्यूमन फैलेसी है, पर्सोनिफिकेशन है, ऑनोमेटोपिया है, पैथेटिक फैलेसी है। तो इन आर्ट एंड लिटरेचर द एक्ट ऑफ डिस्क्राइबिंग एनिमल्स, एनिमल को डिस्क्राइब करने का जो एक्ट होता है लिटरेचर के अंदर, थिंग्स में हैविंग ह्यूमन फीलिंग्स वो रखते हैं, तो उसको क्या कहा जाएगा यहाँ पर? तो देखिए दो ऑप्शन आपको लगेगा इसमें, सी भी हो मतलब बी हो सकता है या फिर डी हो सकता है, तो लेकिन आपको गलत यहाँ पे नहीं करना है। तो इसको देखिए पैथेटिक फैलेसी कहते हैं हम लोग, पैथेटिक फैलेसी। Who invented the term pathetic fallacy? तो मैथ्यू अर्नोल्ड है यहाँ पे, जॉन रस्किन है, जॉन राइडर ने। किसने इस टर्म को कॉइन किया था? पैथेटिक फैलेसी को। तो इसको कॉइन किसने किया था? यहाँ हो जाएगा जॉन रस्किन। राइट आंसर इज जॉन रस्किन, बी ऑप्शन वेरी करेक्ट। अ लाइन ऑफ 10 सिलेबल्स, 5 फीट होते हैं, 10 सिलेबल होते हैं। ईच फुट इज कंपोज्ड ऑन अनस्ट्रेस्ड होता है पहले, सिलेबल फॉलोड होता है स्ट्रेस्ड के द्वारा। तो अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड, इसको तो आप सीधा समझ जाएंगे बिल्कुल, यहाँ पे कुछ भी बताने की ज्यादा जरूरत है ही नहीं। तो यहाँ पे हमारा आयनिक पेंटामीटर सही है। अ लाइन ऑफ वर्स पोएट्री दैट हैज ओनली 5 फीट इज कॉल्ड। केवल 5 फीट होते हैं इसमें। अ लाइन ऑफ वर्स होता है, पोएट्री होती है, दैट हैज ओनली 5 फीट इज कॉल्ड। तो पेंटामीटर है, हेक्सामीटर है, मोनोमीटर है, एंजाइममीटर, क्या इसको कहा जाएगा? केवल मतलब यहाँ पे केवल 5 फीट होते हैं, कॉल्ड अ लाइन होती है वर्स पोएट्री की, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनता है पेंटामीटर। ठीक है, पेंटामीटर। The anticipation and answering of possible objections in rhetorical speech. प्रोलेप्सिस है, पैरालाइसिस है, और एपिलेप्सी है या रिटोरिक है। द एंटिसिपेशन है, आंसरिंग है, पॉसिबल ऑब्जेक्शंस इन रिटोरिकल स्पीच की बात यहाँ पर हो रही है। तो इसको आप क्या कहेंगे? ये हो जाता है आपका प्रोलेप्सिस। क्या होता है? प्रोलेप्सिस। अ लाइन ऑफ पोएटिक वर्स दैट कंसिस्ट ऑफ 4 मेट्रिकल फीट। एक लाइन होती है पोएटिक वर्स की जो कितने कंसिस्ट करती है? 4 मेट्रिकल फीट कंसिस्ट करती है। तो पेंटामीटर है, टेट्रामीटर है, हेक्सामीटर है या डेकामीटर। तो ये आपका हो जाएगा टेट्रामीटर। क्या हो जाएगा? ये वाला टेट्रामीटर यहाँ पे आपका सही आंसर बन जाएगा, ये टेट्रामीटर, इनके बी ऑप्शन। अ मीटर ऑफ 3 मेट्रिकल फीट पर लाइन। एक मीटर होता है 3 मेट्रिकल फीट पर लाइन। ट्राईमीटर, टेट्रामीटर, हेक्सामीटर, डेकामीटर। मीटर ऑफ 3 metrical feet per line, trimeter. A meter of 3 metrical feet per line, that is trimeter. A metrical foot consisting of one short
or unstressed syllable followed by one long syllable. Metrical foot consisting of one short syllable. A metrical foot consisting of one short syllable, unstressed, short unstressed syllable followed by one long stressed syllable. That is iambus. In English, Ottawarima first appeared in Elizabethan translation of. In English, Ottawarima first appeared in Elizabethan translation of. Aeneid, Tasso and Aristo, Sorab and Rustam, King James Bible. Tasso and Aristo. What are the policemen instructed to do if someone fails to stand in Don Pedro's name? What are the policemen instructed to do if someone fails to stand in Don Pedro's name? Kill him, beat him up, ignore him, call him names. Ignore him, C option. Whose house are the policemen told to be particularly vigilant around? Whose house are the policemen told to be particularly vigilant around? Don John, Don Pedro, Leonardo, Dogberry. Leonardo. Unaware that police are listening, who explains how Claudio and Don Pedro were tricked into thinking Hero was unfaithful. Unaware that police are listening, who explains how Claudio and Don Pedro were tricked into thinking Hero was unfaithful. Borecchio, Conrad, Don John Dogberry. Borecchio. What is the stated offence for which the police arrest Conrad and Borecchio? What is the stated offence for which the police arrest Conrad and Borecchio? Treachery, lechery, treason, theft. Lechery. लीकरी या लीचरी बोलेंगे जो भी बोलेंगे इसको. Who argues affectionately with Hero about what she would wear on her wedding day? Who argue affectionately with Hero about what should wear on her wedding day? Ursula, Beatrice, Margaret, Claudio. Margaret, B option. Although she is unaware of Don John's treachery, on the morning of her wedding, Hero experiences a strong sense of guilt, nausea, foreboding, vulnerability. Foreboding, B option. Why is Beatrice annoyed with Margaret on the morning of Hero's wedding? Why is Beatrice annoyed with Margaret on the morning of Hero's wedding? Margaret is teasing Beatrice. Margaret lusts after Benedict. Margaret stole Beatrice's hat. Margaret chatters incessantly. Margaret is teasing Beatrice, who approaches Leonardo just as he is about to enter the church for Hero and Claudio's wedding. Who approaches Leonardo just as he is about to enter the church for Hero and Claudio's wedding. Don Pedro, Beatrice, Dogberry and Burgess, Conrad and Borecchio. Dogberry and Burgess. Who do Dogberry and Burgess request as an audience while they interrogate their prisoners? Antonio, Claudio, Don Pedro, Leonardo. Leonardo. At the church, who asks Claudio if he wishes to marry Hero, prompting Claudio's outraged outburst and accusations.
At the church, who asks Claudio if he wishes to marry Hero, prompting Claudio's outraged outburst and accusations. Leonardo, Don John, Don Pedro, Friar Francis. Friar Francis. After hearing the accusations against Hero at the wedding, what object does Leonardo request? A dagger, a vial of poison, a gun, a boulder. A dagger. After Claudio accuses Hero of promiscuity in front of everyone, what does Hero do first? Defends herself, fall unconscious, jumps out a window, or runs away. Fall unconscious. Who immediately realizes that Don John is the likely culprit behind the plot of Slender Hero. Benedict betrays Francis Claudio. Benedict. That is Benedict. After Claudio jilts Hero at the altar, what does Beatrice ask Benedict to do? Convince Claudius reconsider, run away with her, duel with Don John, kill Claudio. Kill Claudio. After Claudio jilts Hero, who is the first person to challenge him a duel? After Claudio jilts Hero, who is the first person to challenge him to a duel? Benedict, Antonio, Leonardo, Borraccio. Leonardo. After the aborted wedding, what do Claudio and Don Pedro ask Benedict to do the next time they see him? Cheer him up. After the aborted wedding, what do Claudio and Don Pedro ask Benedict to do the next time they see him? Cheer them up, go on vacation, marry Beatrice, talk sense to Leonardo. Cheer them up. After Borraccio confesses, what does Leonardo order Claudio to do? Leaves town forever, pay back Hero's dowry, stab himself, write Hero's epitaph. Despite being a witty and brilliant conversationalist, Benedict bemoans his ability to write Beatrice a sonnet, paint Beatrice portrait, make Beatrice laugh, sing Beatrice a song. Uh, write Beatrice a sonnet. After Borraccio confesses, who informs Beatrice and Benedict that the scheme against Hero has been revealed. After Borraccio confesses, who informs Beatrice and Benedict that the scheme revealed यहाँ पे आना चाहिए has been revealed revealed आना चाहिए यहाँ लास्ट में तो Borraccio confess करता है तो he informs Beatrice and Benedict that the scheme against Hero has been Ursula, Antonio, Margaret, Friar, Francis. Yes, that is Ursula. A option is correct. Claudio's epitaph is a poem celebrating Hero's beauty, innocence, musical ability, death. Innocence is the right answer. After Claudio leaves Hero's grave, After Claudio leaves Hero's grave, who does he believe he is going to marry? Hero's ghost, Hero's waiting woman, Don John's mistress, Leonardo's niece. What do Hero Beatrice and the waiting woman wear to hide their identities at the second wedding? That is masks. What does Beatrice do when Benedict first asks her in front of everyone if she loves him? What does Beatrice do when Benedict first asks him in front of everyone if she loves him? So she says no, she kisses him, she slaps him, she runs away. He says no. What happens to Don John at the end of the play? Leonardo murders him, he commits suicide, Benedict beats him senseless, he is taken prisoner.
He is taken prisoner. Which play of Shakespeare is set in Messina and centers around two romantic pairings that emerge when a group of soldiers arrive in the town? The first, between Claudio and Hero, is nearly altered by the accusations of the villain Don John. The second, romance between Claudia's friend Benedict and Hero's cousin Beatrice. तो टिक सेंटर स्टेज एट द प्ले. तो अभी अभी मैं बहुत सारे क्वेश्चन के बारे में पढ़े हैं. दैट इज द मच अडू अबाउट नथिंग 1598-99. हैनरी फिफ्थ कब है 1599. जूलियस सीजर कब है 1599. सारे ही इसी टाइम पीरियड के हैं, जुलाई की 1599. और फाइंड द इनकरेक्ट मैच ऑफ एनिमल्स एंड देयर यंग वंस. तो एडल्ट है, इधर यंग वन है. हैन, चिकन चिक, हॉर्स कॉल्ड फिली फॉल, जैक, फॉल जोई, या फिर लियोपर्ड वेल. दैट इज द डी ऑप्शन इज इनकरेक्ट. ये आ जाएगा कब, लियोपर्ड का कब, नॉट वेल. Find the young one in these questions also. Find the incorrect match of animals and their young one. Lion, Will, Panther, Joey, Peacock, Chick, Peacock, Ram, Lamb. That is Panther. It is cub, not Joey. तो Lion Whelp हो गया एंड Peacock चिक या पीचिक हो गया और Ram का Lamb हो गया. That is. तो ये क्वेश्चंस थे. बाय बाय, टेक केयर गाइस. मिलते हैं फिर से किसी वीडियो में. बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए.